आगे से अब आगे आज जी क्वेश्चन. So I will leave I will not, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है. But if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he is not conceding. He is contesting. He is saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying. But as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the. नहीं, independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships. And it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one the time. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक करने फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issues. मैं आपको कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट क्या करें. I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दे. मैं आपको रेलेवेंट है, मैं रेलेवेंट बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है कि जजमेंट? जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी. बट आई जस्ट वांट टू रीड वन लाइन. को ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना. जी वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटिव लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक. To me each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. ठीक. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court
propriety demands that the second High Court should say, okay, the first High Court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe sir, सपोज एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी। अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी, उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी। ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल। वो तो सर देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं। सर बिल्कुल सही। अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम cause of action. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इस तरह हर election होता है सर। If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं reject, same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue, but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Peshawar से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं सर। या उनका एलिगेशन होता कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है, मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। सर लेट मी पुट इट दिस वे, तो एक प्लिनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर। सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लिनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का, भाई हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं। सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute। और साहब that is all right। हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सबको अच्छी नहीं। Your Honor, there were यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। अभी सिचुएशन क्या है? इट्स वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My Lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को। नहीं, we want it fixed. My Lord, we want it fixed. My Lord, it will be. Gaur साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं we are hearing आप देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का, भाई अभी हमने कहा ना, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ